Hello and welcome to We Learn. Session 3, Leadership and Team Effectiveness, Group and Team Culture. Topic covered: Group Development Stages, Introduction, Tuchman Stage Model, Krisick Punctuated Equilibrium Model, Selection and Development of a Team Members, Selecting the Right Team Member, Development of a Team Member, Mentoring, Evaluating and Improving the Training and Development, Group Norms and Group Thinking, Cause of Group Thinking, Stages, Strategies for Avoiding the Group Thinking, what can managers do to the maximum group thinking, Group Cohesiveness, Success of Cohesiveness, Consequences of Group Cohesiveness, and the Facilitation Skills for the Teamwork. So in this session we will actually going to study about the stages in the team perform और टीम क्रिएट होने के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, एंड येस एट द सेम टाइम व्हाट इज दी हाउ वी कैन सिलेक्ट द टीम मेंबर्स, हाउ वी कैन वर्क ऑन दी ग्रुप कॉन्सेप्ट. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज़ टिपिकली बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ लाइफ साइकिल characterized by the sequence of a development stages. It is basically what defining the life cycle of a group. एक ग्रुप की लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं. So group development theory, there were basically three theories comes into a picture for the group development. First is the sequential stage theory, another is the phase theory, and third is the punctuative equilibrium. So the sequential stage theory is basically given by the Benz and Spart in 1955, which is further given by the Tuchmans in 1965, and phases theory, which is well started with the Bellers and the Stockberg in 1951, which carry forward by the Bells in 1965, and punctuated equilibrium is actually started with the Greeks 1988 and 1989. So now the successive stage theory. Successive stage theory, how this group basically develop. This basically works on the group developed by going through a successive series of change. Group जो है एक successive theory of series of change में होता है, and move from the immature stage to the mature stage. In that means successive stage हमेशा एक success और एक scenarios को define करती है कि group कैसे एक immaturity stage से mature stage पर जाता है, एक group कैसे develop होता है, क्या series होती हैं उसके increase होने की. Whereas phase theories basically works on group are continually shifting their focus from the one focal concern to another focal concern. That means हमारा जो group होता है वो focus area उस concern level से कैसे differ करता है. So there are always the one focal concern and another is another focal concern. तो उन that concept हमारा group किस तरीके से perform करता है उन phase theory के अंदर. Then punctuative equilibrium is basically the long period of equilibrium are punctuated, that is interpreted by the period of radical changes. हमेशा किसी ना किसी तरीके के changes जो हैं वो occur होते हैं, and these changes always bring a certain kind of we can say the interruptions between the group and a group increment or the succession. So in that case वो punctuated equilibrium होता है. So in this three contribution in three stages we will all going to discuss one by one. Tuchman's stage model. This stage model is basically on the successive stage, like individual team progress through different stages of a development as they are mature. जैसे जैसे एक टीम ग्रो करती है वैसे ही उसके जितने भी लोग होते हैं वहाँ एक ग्रुप में काम करने वाले, उस टीम में काम करने वाले, वो भी मेच्योर होते हैं. सो टीम प्रोग्रेस इज बेसिकली थ्रू विद द डिफरेंट स्टेजेस, वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलती है, एंड दैट डिफरेंट स्टेजेस एक्चुअली ब्रिंग्स अ ग्रुप टू द मैच्योरिटी लेवल. नाउ व्हाट आर दीज स्टेजेस? वो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? वो स्टेजेस जो होती हैं वो 5 तरीके की होती हैं. वन इज फॉर्मिंग, अनदर इज स्टॉर्मिंग, अनदर इज नॉर्मिंग, then performing and adjoining. That means forming, storming, norming and performing and adjoining is these stages, 5 stages which actually bring out the team development. First stage is forming. Forming is basically about the awareness. इसका जो main theme होता है इस concept का या इस stage का वो होता है awareness. That means allow a time for a member to get acquainted. That means आपके members को जब एक aware होता है, that means they were actually comes into a picture और वो एक team के अंदर add on होने जा रहे हैं. This is provide the essential information about the content and process. It is what basically working on the
essential information, जितनी भी informations होती हैं related to group, the available members in the group, हमारे ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, ग्रुप में किस तरीके की क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं. दिस स्टेज बेसिकली एम्फोसाइज द न्यू स्किल्स रिक्वायर्ड, और यहाँ पर बेसिकली न्यू स्किल्स रिक्वायरमेंट की ही कॉन्सेप्ट की बात होती है. एंड देन आइडेंटिफाई एंड रिलेटेड की टीम वैल्यूज टू द करंट टास्क. इट इज़ बेसिकली परफॉर्म्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड की टीम्स वैल्यू टू द करंट टास्क. It also share the stories of a past accomplishment and celebrations. It is basically working on this. जब एक initial stage पर the member of a group come together, they actually comes into a little sharings in terms of their past experience, about their self, about their celebrations. उसके बारे में discussions होती हैं. And yes, at the same time, create a team vision of an outcome. In terms of जब एक team members में at an introduction stage only, जब एक team vision create होता है. And set a goal to achieve the outcome, and yes, at the same time they perform to set up a goals to achieve that particular outcome. Second stage is basically the storming stage. Storming stage is basically what? A conflicting stage. This is what जहाँ पर एक conflict arise होते हैं, जहाँ एक forming stage में एक introduction arises होते हैं, वहीं पर एक storming stage में conflict arise होते हैं. This is what act assertively and set the parameters for a team, जहाँ पर एक रूल्स, क्राइटेरियाज, रेगुलेशंस क्रिएट की जाती हैं, पैरामीटर्स क्रिएट किए जाते हैं कि ग्रुप कैसे परफॉर्म होगा. इट बेसिकली लिसन अटेंटिवली टू ऑल द व्यू पॉइंट्स. जितने भी व्यू पॉइंट्स होते हैं उन्हें ध्यान से सुना जाता है, अटेंटिवली सुना जाता है, जस्ट टू फोकसिंग ऑन दैट व्हाट द पीपल वांट्स टू स्टे. इट इज़ बेसिकली ऑन द नेगोशिएशन स्टेजेस, जहाँ पर एक नेगोशिएशन स्टेजेस आती हैं जब मेंबर आपस में नेगोशिएट करते हैं, बट एंड प्रोबेबली द ग्रुप में रिक्वायर्ड द mediators or the arbitrators in that group. So it is what using mediations and the negotiation and the arbitrations kind of a technique in that case. Consider the new perspective and alternative in that. Consider जब हमारे जितने भी new perspectives होते हैं उन्हें consider किया जाता है, alternatives to resolve that storming or conflicting factors, and yes, at the same time suggest and solidate the optional way to view the problem. एक सजेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, एक ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को देखा जाए, उन्हें रिजॉल्व किया जाए. Then third is the norming stage. Norming stage is basically what? This is the cooperation stage. जब एक प्रॉब्लम्स या एक कन्फ्लिक्टिंग्स या जब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म आउट हो रहे होते हैं, उसके बाद एक कॉपरेशन स्टेज आती है. The stage is basically when the members of that group particularly wants to cooperate with each other and wants to perform in the group. So it is what provide the opportunity for the involvement by all, जहाँ पर एक opportunity और environment होता है और people was actually looking forward to give their input. Provide the opportunity for the members to learn from and assist one another in terms of, yes, it actually provide opportunity to each other and to bring out the togetherness and try to cooperate with each other and learn from one another's assistance. And yes, at the same time model and encourage the supportive behavior. जितना भी एक सपोर्टिव बिहेवियर होता है उसे इनकरेज किया जाता है, उसे पुश किया जाता है कि हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बिहेवियर के अंदर होना चाहिए. देन ओपन द कम्युनिकेशन लाइन्स इन टर्म्स ऑफ, यस, ब्रिंगिंग आउट द प्रॉपर कम्युनिकेशन लाइन एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो पाए. दैट कम्स इन टू द नॉर्मिंग स्टेज. Provide the positive and corrective task related feedback. That means to bringing out the proper task related feedback for the organization कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना. And yes, at the same time add some humor and a fun to the work setting in terms of, yes, bringing out the proper sense and yes fun for the working settings. जो आपके जितने वर्क सेटिंग्स होते हैं उसमें एक ह्यूमर और फन एड ऑन करने की कोशिश की जाती है. सो दिस इज बेसिकली अ स्टेज ऑफ एन कॉपरेशन. Then stages of the fourth stage is basically a performing stage. Performing stage is what? The productivity stage, यानी कि जहाँ पर जितने भी conflicts, जितने भी एक नेगोशिएशंस अराइज हो रहे थे उन्हें रेक्टिफाई करते करते, उनके साथ कॉपरेट करते करते, when the group is actually start performing. So that is why the theme of this concept is productivity.
The reward then recognition performance outcome and the positive work relations was comes into a picture. ज़्यादा से ज़्यादा maximum rewards, maximum recognitions of performances comes into that picture, and people was actually putting their 100% to get that particular rewards and recognition. Involve the team in the group problem solving and the futuring. That means that the team, each and every team was basically working into the problem solving technique and futuring. Share the decision making opportunity, working on the decisions making opportunity कि जो भी decisions हैं उन पर work on किया जाए, उन factors पर perform किया जाए. That comes into the share the decisions making opportunity. Another is examine how implementation will affect the team and rest of the organization. That means how is proper implementation was comes into a picture and rest of the and yes, bringing out एक team जो है वो अपने आप में एक अलग से नोटिस्ड होती है. दैट कम्स इनटू हाउ इम्प्लीमेंटेशन विल बी इफेक्ट द टीम. हमारी जो टीम है वो किस तरीके से इफेक्ट होगी टू वर्क इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज द डेलीगेशंस टू फॉस्टर द पर्सनल डेवलपमेंट. यस, एट द सेम टाइम कितनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अराइज हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में परफॉर्म कर रही है. सो दैट कम्स इनटू द स्टेज 4 ऑफ अ परफॉर्मिंग स्टेज. Then stage 5th is adjoining. Adjoining is basically the stage where the group is going to be divided, or we can say that separate, or the separation was there. So in terms of that, this was the kind of an area where all the performances or tasks going to be wind up here. So it is what provide the evaluative performance feedback. So it is what जितना भी आपके performances होती हैं वो चेक की जाती हैं और उन बेसिस पर आपके feedback provide किए जाते हैं. And yes, at the same time review the task and working relationship कि group का जो है working relationship कैसा है, task कैसा है. Create a celebration activity with which basically emphasize on the recognition and a fun part. So working on the celebrations areas of कि किस तरीके से हम और ज़्यादा एक create a celebration activity है. There is an adjoining stage but into the celebration part ki okay, if it adjoined, so that doesn't mean that the person is going to be adjoined from the organization or with each others, and conduct a closure ceremony to specify the project conclusions. Yes, at the same time bringing out the together efforts of that particular project members, उस पे जिसमें जितने भी project members ने काम किया होता है, project members ने perform किया होता है, उनकी clubbing. So this is the 5th stage, which is adjoining stage. So these are basically 5 stages in the Tuckman stage model. Now this is the diagrammatical representation of these stages, जिसके अंदर हम लोगों ने main 4 stages की बात की है, forming, storming, norming and performing. And yes, at the same time the last one is adjoining is not in the part of this. So yes, you always provide a motivation. And yes, motivation it's kind of in a process event. जैसे कि proposal funding है तो एक forming होती है, face to face meeting होगी उस person से तो वो एक storming stage होगी, एक negotiations आएंगे, email interactions होंगी, grant extended होगा, so this is norming stage. At the same time अगर website containing lessons completed, so it is performing area. So in that case outcomes what it is minimum acknowledged by the own department. जब एक acknowledgement होती है to forming and to creating that particular effort, then role and timely clarify the trust build, that is the storming stage. Another is recommend to the project disclosures of the individual concern, and national awards is the performing stage again. So these are basically the outcomes and the reactions. क्या क्या reactions होते हैं इन stages में. अगर forming stage है तो it is the initial stage, so obviously the feeling of excitement would be there. Storming stage में एक fear होगा to commit, कि आपको एक commitment put down करनी होगी. You always have a certain kind of a doubt about your own and others' ability. And yes, at the same time lack of reward system would be the one of the point, or in that case ये storming stage में होता है. Norming stage is basically re-owned energy, जहाँ पर आप अपनी energy को सबको regain करते हो to perform it, to re-perform it. And yes, at the same time you facilitate it and you be the productive, you try to increase your productivity. Emerge as a problem when concern over the lack of support in the human department remains. And whereas in the performing stage there was a feeling like of a satisfaction at the job well done. जिस तरीके की jobs की जा रही हैं उसमें एक job well done होगी. Looking for the more opportunities of the work collaborators, still concern over the lack of the
support from the home department. So these kind of factors would be generated, and this kind of feeling or reactions comes when these stages or the group is actually comes into a stages. So this group is basically, the stages are basically defining out that each and every group actually go through with this kind of stages. ऐसी स्टेजेस पर हर एक ग्रुप जो है पार्टिसिपेट करता है और इनसे गो थ्रू होकर जाता है. So that comes into the Tuckman stage model. And yes, this is the one of the grammatical picturization which gives you the more clear idea about that all the 5 stages. That is forming stage where the team acquired and established the ground rule, जहाँ पर बेसिक एक फॉर्मल स्टेजेस आते हैं. स्टॉर्मिंग स्टेज में मेंबर वाज बेसिकली ट्राइंग टू मेंटेन द control on that particular group, and that comes on to the group leader concept, and that show the hastiness in the group, where in the norming stage the members was actually try to comes together and start putting close relationship, try to maintain a close relationship, and together development would be there. So we can say that the feeling of a coordination will be generated कि coordinate करके ही perform करना चाहिए. Whereas in performing stage, yes, team members work together, getting their job done. वो अपनी job पर काम ज़्यादा focus करते हैं. They were performing at a job done. And at joining में team members may be disband on achieving their goals, and because a member leave. So in that case, adjoining stage तब भी होती है जब किसी तरीके का project हो, और प्रोजेक्ट जब फाइंड अप हो जाता है, दैट मीन्स दिस इज द एंड स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो उस केस में भी एडजॉइनिंग स्टेज आती है. whereas there was another area also that team is actually going to be disband क्योंकि जो members हैं वो छोड़कर जा रहे हैं या adjoin हो रहे हैं. So that comes into the adjoining stage of the group. So that comes into the 5 stages of the model. Now the Grisic punctuated equilibrium, जैसा कि हम लोगों ने 3 स्टडी किए थे. So the third one is the Grisham's punctuated equilibrium, जहाँ पर एक equilibrium factor की बात हुई थी कि there was always a statistic area और एक balancing part होता है हमेशा ग्रुप के अंदर, तभी एक proper group create होता है. Whereas Tuckman is basically studying about the stages, और यहाँ पर एक balancing issues के बारे में discuss किया गया था. So group remains in terms of that is group remains fairly static, maintaining a certain equilibrium for a long period of time. So एक static part या ये कह सकते हैं कि एक maintaining a equilibrium part एक group के लिए हमेशा रहता है. It basically change during these period in the incremental, largely due to the resistance of change that arises when the system take a root and processes become installation. So in that case, in this model, resolution change over it in a brief. Punctuated, it's basically crystallized by the crisis or a problem that break through the systematic erratic and shake up the deep organization structure in the place. So in that terms, that means situational changes की वजह से या किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की वजह से हमेशा एक ग्रुप में इफ़ेक्ट्स आते हैं, हमेशा एक ग्रुप में एक प्रॉब्लम्स और एक इंटरप्रिटेशंस अराइज होती हैं. सो इन दैट केस उन सब चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए या उन सब चीज़ों के साथ कोप अप करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू डील विद दी सर्टन काइंड ऑफ इन बैलेंसिंग पार्ट. मतलब एक ग्रुप में एक इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. So this is basically the all about the equilibrium model. So all the group move through the period of the inertia separate by the brief period of transaction. So in that case हमेशा एक ग्रुप के कुछ phases होते हैं जो कि एक transactions के साथ होके जाते हैं. So it could be phase 1, then there is a transactions between the phase 1 and then phase 2. So in that case, what is phase 1? Phase 1 is basically team develop not through a series of stages but rather through a period of stability or equilibrium in which they tried to establish a working agenda and develop the norms that guide early project effort. In terms of this is the team development which is working on the series of stage जो कि एक perform करते हैं in the terms of a period of stability part and the equilibrium part in which they actually try to establish the working agenda. So एक agenda create करना चाहते हैं ग्रुप के अंदर, एक stability requirement stability period generate करना चाहते हैं just to develop the norms of the organization. Yeah, we can say that just to develop the norms in the group. Then transaction stage is what the second period of stability which
with activities shaped by the decisions made during the transaction point. Completion is the last period of the activity, focusing on the editing and preparing the material for the external use. In terms of this is what working on जितने भी norms and all create किए जा रहे हैं stage 1 में, phase 1 में, उनकी एक shaping out होती है. That means you actually perform to work on that particular area, particular sectors पर काम perform करने के concepts को लेकर आते हैं. Then phase 2 is what the transactions time are the window of the opportunity. So this is the phase 2 जहाँ पर एक opportunity होती है to bring out that certain change, और उसी change के behalf पर अपने group के अंदर भी किसी तरीके के changes आकर कर रहे हो. So in that case yes, we can see in a graph कि time के साथ साथ किसी ना किसी तरीके के changes आकर होते ही हैं. सो दैट फर्स्ट इज द फेज 1 जहाँ पर एक चेंज को ध्यान में रखते हुए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स क्रिएट किए जाते हैं. देन दी फर्दर परफॉर्मेंस, दैट इज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रैपिड चेंजेस होते हैं टाइम के साथ साथ. एज टाइम इंक्रीजेस देन अगेन देयर वाज अ चेंज अकर विच इज अगेन अ स्टेबिलिटी पार्ट की अगर आपने एक डेफिनेटली टाइम चेंज हो रहा है बट उससे कोप अप करते हुए आपने एक स्टेबिलिटी इशू जनरेट किया है. देन अगेन देयर वाज अनदर इफेक्ट इन योर ग्रुप और योर टीम. आपकी टीम दोबारा से टाइम इफेक्ट्स पे चेंज हो रही है बट अगेन यू क्रिएट दोज काइंड ऑफ नॉर्म्स जो कि एक स्टेबिलिटी इशूज पर दोबारा आ गए. सो दिस कम्स इन टू द रिलेशन ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन द चेंज इन द time and yes at the stability factor in the change. Now tuber system model. Tuber system model is basically like others group development model. A steward tube system approach views the group development through a series of stage. तो इसमें भी एक ग्रुप को सीरीज ऑफ स्टेज की तरह ही कंसीडर किया गया है. तो ट्यूब्स ने 4 स्टेजेस को डिफाइन किया है. The first stage is the orientation stage. Orientation stage is again the group form and identify the problem to be solved and being assessed how to solve it. That means in that stage, tubes was basically identified it कि हाँ, the people basically comes together and form a group and identified a problem कि जो group create हुआ है वो group क्यों create हुआ है. Then after orientation, this is the conflict area. That means a conflict in this case does not have to be the fighting. In this conflict stage, basically the group members generate the debate and evaluated ideas. That means it is basically working on to the factors like how to perform. एक थोड़ी सी debating factors होते हैं, थोड़े से evaluating factors होते हैं. Healthy conflict was basically comes into a picture from the which help to avoid the group thinking and compulsory, but yes, it's a conflicting stage. After that conflicting stage, the consequence stages basically comes into a picture. This is what the group member comprises agree on the alternatives and implement. So in that terms it is agree on the alternative factors and implemented factors कि क्या क्या एक आपके ग्रुप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने की क्या अल्टीमेट क्राइटेरियाज हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास एंड हाउ यू एक्चुअली रिजॉल्व इट. एंड देन द क्लोजर्स इज बेसिकली द प्रोजेक्ट इज ओवर. So and yes, the final product is basically completed. So these are the 4 series of stages, which is basically the orientation, conflict, consensus and the closures part. Now I guess there are a few questions which you have to do it yourself. First is define the stage of a group forming in the Toki's method. जो भी Toki's method ने जो stage of group formations दिए हैं वो पूरा आपने इसमें define करना है. Then what is the tuber system model? So you have to explain the tuber system model also. So yes, this is all about for the today's session. We will winding up here. So thank you so much. Happy learning. We learn.